to your accounts. You can also refer to the internet for whatever information you need. And I personally love the magazine collection in this library. And not only this, we have the e-library right over there, and you can see the students working very hard. Moving on to our auditorium right now. Assalamu alaikum, welcome to the Greenwich family. People, If you have any queries or concerns regarding to your courses, our communication center is here to help you out. And not only queries and concerns, but Communication Center ensures effective communication with each of the students they have in Greenwich University Karachi campus. And besides me, let me show you. Besides me, I have a student desk right over here. You can log into your account over here, and then you can know your status, check your courses, your timetable, and any kind of query which you have regarding your fee challan, regarding anything which you want to know is right over here inside with our experts. Now we are at the examination department. The students usually consider this as one of the scariest places. Scary but very important. All your exam queries, all the things regarding your attendance are solved in this department, and so this is very, very important. And like we mentioned before, that there is huge crowd at Communication Center when the semester begins. There is huge crowd at the Examination Center too, just when there are exams coming up on students' head. So we'll give you a glance of the examination department as well. Now we're at Center of Creative Linkage Learning. Let's move on to what it is. Like you can see over here, the Center of Creative Linkage Learning has three basic functions. The first one is Language Academia, and under this Language Academia we learn three different languages, which are French, Italian and Chinese. The second basic function of CCL is Executive Development Program, and the third function which it performs is corporate communication. So we're standing outside the very interesting and very colorful place in Greenwich University, the state-of-the-art media lab. Let's have a look inside. So right over here you can see colorful walls, photographs, and this is basically our post-production studio, and we have high-tech technology over here as well, like we had in the computer lab, and it's an outstanding place for media students. Now this place is a practical vision of, what you see on TV, like the lights, camera, action you hear on TV. It is practically done over here, and you guys can have a very interesting look over here. This little miniature but beautiful window which you're seeing is of our radio lab. Let's have a look inside. This is our room with beautiful interior, and this is meant for radio recording and GTV. Let's have a look over here. It's kind of colorful over here. You can see a lot of pictures, a lot of quotations, and obviously very high-end technology. Hello everyone, and welcome to Greenwich Radio Station. You're listening to Afshan Farooq at Audio Diaries, and the GTV is operated by our Media Lab controllers. Besides me, I have the Greenwich University Research and Development Center, and with that we have the Office of Research, Innovation and Commercialization, ORIC. Let's have a look inside. We're going to have an inside view of Greenwich University Research and Development Center, and this is a very, very useful place for research students, especially those who are doing MPhil or PhD. Over here we have research journals and also ebooks, and most importantly we have a lot of research experts over here who help students out with their queries. So this was the Greenwich University Research and Development Center, a very useful part of our university. That's the indoor sports complex. Let's have a look inside. This is our very fascinating sports room, and over here students get a variety of games. From snooker, table tennis, foosball, Xbox, and a lot more things over here. Not only the sports area, but we also offer a gymnasium, and fitness freaks are often found over here. Heading to the cafeterias now. Here we have two cafeterias where you get delicious food in subsidized rates. This is our Cafe 1. Over here you have delicious food available in subsidizing rates, like I said before, and there's a lot more which Greenwich offers you. There's a variety of food which you can have over here, chill out with your friends, have selfies, and have a lot of fun after your class or before your class. Hello everyone, my name is Ali Jalani and I'm the mentor for Greenwich University's Diplomatic Society. The vision for Diplomatic Society is to provide the students with the opportunities to engage in simulated scenarios of international entities to foster their analytical vis-a-vis oratory skills. The Society will also be responsible for the conduct of Greenwich University's Model United Nations. You're more than welcome to be part of the Society's events, and would also like to have some of you who are passionate about developing a worldview to be part of the Diplomatic Society moving forward.
And by the way, welcome to Greenwich Fraternity, all of you. Looking forward to have you around. Thank you. The idea of TCF came up. Karachi was burning. We were at our lowest ebb. Let's ask this question amongst ourselves. We were 5-6 of us. That do we want to actually be part of the problem? So answer was no, we don't want to be part of it. But we asked ourselves a question that whatever we want to do, we want to actually get to the root of the problem. That once we settled on that we work on health, but what is the root of the health problems? That 40% of the health problems in Pakistan are hygiene related. So we said, okay, then we should work on hygiene. And the root of hygiene lies in education. So that is why we stumbled onto this cause of education. But we didn't know that that solution was TCF. हमारा जो ये इदारा है द सिटीजन्स फाउंडेशन, इसमें ये रोज़े अव्वल से हम सब के लिए एक मजबूत सुतून की तरह है. He has got a feeling for the less privilege of this country. I think that very few people in this country have a mindset which Allah has given Ehsan Salim. You know, somebody said, let's go out and big target. So how about 100 schools? And I said, no, maybe 500 schools. Then one of the founders, Maroom Rashid Abdullah, he said, nahi yaar, not less than 1,000 schools. So each one of us put up money ourselves to build 5 schools in a go. We said we will spend 1 year in trying to debug anything which is involved with the school, and if we think that we have perfected it, then we'll go out and ask other people to join. इनकी जो राय होती है उसमें समझदारी भी होती है, दानाई भी होती है, और वो दूर तक एक चीज़ को देखते हैं और फिर अपनी राय देते हैं और संजीदगी से देते हैं. One of the reasons why people don't send their girls to school is because of male teachers. So we also decided that all our teachers will be female. And to this date, all our teachers in the entire system are female. Mr. Ehsan Salim is a visionary and he's a exemplary human. I would like to say that he has the heart in the right place. Our fathers always made it a priority to ensure that all of us, like my siblings and I, understand that we need to be responsible actors in every way. We need to be responsible friends and family, responsible colleagues, responsible citizens, and overall responsible humans. The one thing that I feel he actually really inculcated in all of us is that the whole is greater than the sum of all its parts. Baba does not talk about his achievements, and we kind of feel overwhelmed, dwarfed by it, and also proud that he's managed to achieve so much, mashallah. And like Baba says, it's his ticket to heaven. एक्चुअली तो उनके साथ बहुत सारे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हैं, मगर एक जो है कि एक एल्डरली लेडी ने उनका हाथ पकड़ के एजुकेशन का थैंक यू करने के लिए उनका हाथ पकड़ के उनके हाथ पर किस किया और बोला कि जी अब बेटा मुझे नज़र आने शुरू हुआ है जब से मैंने ये अडल्ट लिटरेसी में पढ़ाई करने शुरू की है. Then I would actually much respect a child who gets up and becomes a doctor or something and say, what does your father do? And he proudly says कि सर वो गधा गाड़ी चलाता है. Because उसकी गधा गाड़ी चलाने से ये डॉक्टर बन गया. तो they should have no shame, because every work, गधा गाड़ी चलाएं, sweeping the floor, this is work. And work cannot ever be menial. Work is work, and there is a lot of pride in doing your work.
I want to honor and congratulate Ehsan first on getting this doctorate of humane degree, and also feel that Greenwich University also should be congratulated for choosing and picking out the right people who have done service to the nation. We set up a very audacious target, but Alhamdulillah, that has been surpassed. In a world which is always moving, photography lets us stand still. It's something much more than just a collection of pretty pictures. It's the stories that are behind those pictures. Hi, my name is Faraz Iqbal. I'm your mentor for the Photography Society at Greenwich University. So for the next 3-4 months, I have planned a lot of events that will be happening under this society. For example, we have photo walk, photo contest, photography exhibition, photography trip. That will really help you guys understand what goes behind taking the pictures. We also have planned a couple of photography workshops, and in those workshops you'll understand how pictures are taken, what a lens does, what the body does, what is good lighting, what is bad lighting, what is good composition, and you'll really get a chance to explore yourself. So I really look forward to seeing you guys in the society, and yeah, let's have fun. Thank you. मिस शर्मीन लारी क्या करती थी कि अगर आप क्लास में लेट आए तो आपको गाना गाना है। भाई आवाज़ अच्छी नहीं है, गाना कैसे गाए बंदा? और फिर नज़र आ रहा है कि सामने आपके पास 30 बच्चे हंसेंगे आपके ऊपर, कैफेटेरिया में मजाक बनाएगा। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है। यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे होते हो तो हमने भी देखा, हमारे मुख्तलिफ अलमनाइज आए, उनकी हमने लव स्टोरीज सुनी, ठीक है, तो सक्सेसफुली माशाल्लाह से अचीव भी हुई, किसी की नहीं हुई तो मैंने कहा जी छोड़ दें, बस इस बात को ना आप डिस्कस करें। आपके साथ क्या कुछ हुआ, कुछ आप शेयर करेंगे? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अच्छा। कोई मेरे पास नहीं आई, किसी ने मुझे प्रपोज नहीं किया, किसी ने मुझे नहीं बोला कि आप अच्छे, और ना ही ये चीज़ मैंने की। लेकिन आप किसी को पसंद करते थे? मैं सबको पसंद करता था। मेरी पर्सनालिटी हमेशा से ऐसी रही है कि आई वांट टू इंटरैक्ट विद एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कॉफ़ी विद अलमनाई। हर एपिसोड में आपकी मुलाकात डिफरेंट अलमनाई से करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में क्या कुछ किया, उनकी मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं, उस पर बात करते हैं। और आज जिस अलमनाई में हमें ज्वाइन किया है, आपको सुन के भी मज़ा आएगा और हम भी उनकी बातें सुन के बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। हम वेलकम करेंगे आगा अहमद हुसैन साहब को और पूछेंगे, जानेंगे कि वो प्रोफेशनली अब क्या कर रहे हैं। आगा अहमद, आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर दावत दी, हमें इज़्ज़त दी, ग्रीनिच ने हमें इज़्ज़त दी, एंड इट्स अ ब्लेसिंग टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले तो बताएं कि आप प्रोफेशनली कर क्या रहे हैं? आगा अहमद हुसैन अब क्या कर रहे हैं? ग्रीनिच की बातें तो हम पूरे प्रोग्राम में करेंगे, अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी अपने फैमिली बिजनेस से वाबस्ता हूँ। हम कराची में सदियों से लैंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। लैंड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम हाउसिंग स्कीम्स बनाते हैं। हाउसिंग स्कीम्स बनाकर उनकी प्लॉटिंग करके हम आगे उसको सेल आउट करते हैं। उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी मेंटेनेंस होती है, उसकी केयर टेकिंग होती है, उससे वाबस्ता दीगर चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो आई एम एट द मोमेंट विद माई फैमिली in this family business, and alhamdulillah it is a great feeling to be working side by side with your father. क्या बात है। That feeling is something that I cherish every day. क्या बात है। Professionally मेरा ये काम अभी चल रहा है। ठीक है, वेल सेड सर। सर, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का आपका टेन्योर कौन सा था, कब ज्वाइन किया, कौन से प्रोग्राम में आप एनरोल्ड हुए? ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से मेरा रिश्ता कायम हुआ 2007 में। मैं ए लेवल्स करके निकला और सीधा ग्रीनिच यूनिवर्सिटी आया। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी आने की वजह बड़ी मेरे लिए सिंपल थी।
हमारे कुछ जानने वाले यहाँ पर मौजूद थे जिनके थ्रू मैंने रिसर्च की, तो पता चला कि यहाँ के प्रोफेसर्स अच्छे हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर अच्छा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दी जाती है. It was actually a no-brainer for me to enroll myself in Greenwich. 2007 में मैंने बैचलर्स ऑफ साइंस एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपना एडमिशन लिया एंड 2010 में मैं यहाँ से ग्रेजुएट हुआ. पढ़ाई भी की, एंजॉय भी किया, बहुत सीखा, बहुत सीखा. एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, you learn the most when you put your theory into practice. This was given to us by Greenwich University at a very early age. Of course, आपके कुछ फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, जिनको आप 001 कहते हैं या 101 कहते हैं. ये फाउंडेशन कोर्सेज हैं जिस पे आप अपनी थियोरी को समझते हैं कि आप करने क्या जा रहे हैं. But as soon as you enter the second level of your courses, you start putting all of that in practice and it is the best feeling ever. आपको पता होता है कि अभी अगर आप जो पढ़कर आए हो आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, अब गिरोगे. You are bound to fail. It's good to fail. And you know that you have a teacher right next to you saying, okay, now you know there is one way that how you're not supposed to do it. So now you'll do it the right way. So they've prepared you for the real life. And once you enter into the industries, आपको सारी अपनी फ्लैशबैक्स आती हैं कि क्या क्या गलतियां आपने की थी और अब आपने क्या क्या नहीं करना, और आप सही डायरेक्शन पे जा रहे होते हो. 2010 में मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया और मैं प्रोफेशनल इंडस्ट्री में आ गया. आई स्टार्टेड वर्किंग. I was associated with the media industry for a short time, and then predominantly I was associated for a decade with the aviation industry of Pakistan. I served as the head of sales for Oman Air for 6 years. Then I served as the head of sales for Turkish Airlines for 4 years until my recent moving to my family business. But in सब के बीच में 2015 में I enrolled myself for my master's program at Greenwich University. लग रहा था ऐसा कि पढ़ाई और होनी चाहिए. You have to keep yourself in that momentum of learning continuously. और शायद अगर मैं इतना अच्छा पढ़ाई में पहले नहीं था, प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद वो स्पिरिट और थोड़ी तेज़ हो गई. तो 2015 से 17 मैंने अपना मास्टर्स किया और ग्रेजुएशन बड़े अच्छे हाई परसेंटेज से GPA से मैंने अचीव की. अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम स्टिल थैंकफुल टू माई सेल्फ, मोर थैंकफुल टू माई वाइफ फॉर पुशिंग मी टू डू माई MBA. वरना आप नहीं करते, राइट? वरना शायद मैं नहीं करता, क्योंकि you always need that motivation behind you. No doubts. And this can come from your parents, from your friends, from your colleagues, from your teachers. मेरी जो ड्राइव थी वो मेरी वाइफ की तरफ से आई, और उसकी भी एक वजह थी कि हमने एक पैक्ट किया था कि I will do my masters. As soon as I end it, you will do your masters. And both of us did it, you know. And alhamdulillah, एक ख्वाब होता है, ख्वाब पूरा होता है, सबको अच्छा लगता है. बहुत खूबसूरत बात. आगे बढ़ते हैं जी. अब ये बताएं कि MBA भी आपका हो गया, कोई ऐसा टीचर जो आपको स्टिल अच्छा लगता हो कि यहाँ इन्होंने सिखाया, इन्होंने पढ़ाया और मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है मैंने अपना उसमें उनकी वजह से थोड़ा बहुत बेहतर किया, तो कोई याद है आपको ऐसा प्रोफेसर? क्यों? मुझे अपने सारे प्रोफेसर याद हैं और हर प्रोफेसर ने मुझे सिखाया. वो भले मेरा रिमीडियल का कोर्स हो या वो मेरा सबसे फाइनल कोर्स हो. Every teacher in this university calls you out, understands you, knows you, gets to know you, and then deals with you in a manner where we are ought to learn. टीचर्स के मैं नाम लेने जाऊंगा तो लिस्ट बहुत लंबी है, बट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आई वुड thank all my professors, all my teachers, all the administration,
it is because of these people that I am where I am. And the way I am here sitting in front of you, trust me, there are thousands of people जो मेरे साथ भी रह चुके हैं, मुझसे पहले के बैचेस में भी रह चुके हैं, who feel equally grateful to all the teachers. क्या बात है। अच्छा सर, विच प्रोफेसर यू डिडंट लाइक, मतलब ऐसा कोई प्रोफेसर हो जो आप जिससे खौफ खाते हो, यार इसकी क्लास नहीं लेनी, या इससे पढ़ना नहीं है, इससे भागना है, जिसने सख्ती की हो सही तरीके से? उनकी मैं इतनी इज्जत करता हूँ, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, उनके लिए हमेशा दुआएं देता दुरानी साहब, I am talking about a professor who used to teach us calculus. His name was Professor Barkat Ali. एंड ये मैं आपको अपने बैचलर्स की बात बता रहा हूँ। गलती उनकी नहीं थी, गलती मेरी थी। मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना था, मुझे कैलकुलस नहीं पढ़ना था, और उनको पढ़ाना था। और उनका अंदाज पढ़ाने का, वो उनको पता था क्लास में कि ये आगा बैठा है, इसको तो पढ़ना नहीं है, तो मैं इसको उसी अंदाज से मैं डील करता हूँ। अब एग्जाम में बैठने के लिए आपको 2 से ज़्यादा एब्सेंस की इजाज़त नहीं थी, तो बैठना भी है। प्रोफेसर की इज्जत करते हैं तो उनको तंग भी नहीं करना है, जो वो कह रहे हैं उसको आपने बर्दाश्त भी करना है। पढ़ के फिर भी नहीं दिया। ये तो पहला सेमेस्टर उनके साथ जब किया तो ये इस तरह का मेरा रवैया था। फेल हो गए, कोर्स रिपीट किया, फिर से वही प्रोफेसर, ले भाई खुद फंस गए, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने कैलकुलस 3 अटेम्प्ट्स में पास किए है, और तीनों दफा प्रोफेसर बरकत थे। लास्ट अटेम्प्ट में क्या आपका ग्रेड रहा, ये बता दें। लास्ट अटेम्प्ट में मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई गॉट अ सी। और जो मुझे याद है उस कोर्स में एग्जाम में आया था, वो मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने इतना उसके लिए पढ़ा था। प्रेशर दिमाग में बन गया होगा, एक कोर्स को 3 दफ़ा पढ़ना। मुझे खुद वो हो रहा है कि आप मतलब बताओ स्टूडेंट कैसे करेंगे। दूसरी दफ़ा समझ में आता है, लेकिन तीसरी दफ़ा जो आपके दिमाग में ये गया होगा, वो आपको सारी जिंदगी अब याद रहेगा। मुझे याद है, आगे बढ़ते हैं, आप वही चीज़ आंसर भी कर दोगे। अच्छा आगा साहब, एक्टिविटी बताएं, आपकी किस तरह की एक्टिविटी कैंपस में रही, कहाँ आप इन्वॉल्व थे? इन्वॉल्व मीन इन सोसाइटीज़ जो एकेडमिक्स की हमारी होती हैं यूनिवर्सिटी की, किस तरह का आपका ग्रुप था, किस तरह का बैच था, क्या एक्टिविटीज़ आप करते थे? हमारा यूनिवर्सिटी में एक कल्चर है, वो कल्चर बहुत ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली ओरिएंटेड है। हम जिस टाइम मैं बैचलर्स में था, यकीन माने एवरी स्टूडेंट न्यू द अदर स्टूडेंट, एंड एवरी स्टूडेंट न्यू एवरी टीचर एंड एवरी स्टाफ मेंबर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। हम जो भी करते थे इस यूनिवर्सिटी में, हम साथ मिल के करते थे। अगर वो स्पोर्ट्स है तो हमारा स्पोर्ट्स में एक सर्कल बना हुआ है, और वो सर्कल को सब एक्सेप्ट करते हैं। एकेडमिक्स है, हम सब मिलके करते थे। मेरा पर्सनल एसोसिएशन कभी किसी सोसाइटी के साथ नहीं रहा, मगर आई ट्राई टू बी एज प्रोमिनेंट इन दिस यूनिवर्सिटी एज पॉसिबल। और उस प्रोमिनेंस की वजह ये नहीं थी कि मैं कुछ सोसाइटी से लिंक्ड हूँ, उस प्रोमिनेंस की वजह ये थी कि ये यूनिवर्सिटी आपको वो इज्जत देती है, तो आपकी पर्सनालिटी उस हिसाब से ग्रूम होती है। बिल्कुल सही बात है। ये मैं अकेला नहीं कहूँगा, आप जिससे बात करेंगे वो आपको यही जवाब देगा। बिल्कुल सही बात है। सर क्लास बंक की कभी ये बताएं कि अभी दिल चाह के क्लास नहीं लेनी और निकल गए बाहर? देखिए जी, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने क्लास बंक नहीं की हो। अच्छा, हमें वाकया बता दें, आपने कैसे की, कैसे प्लान किया, या कभी पकड़े गए क्लास बंक करते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन को पता लग गया, टीचर को पता लग गया? देखें, हमारी एक टीचर थी और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं अभी भी उनसे इन टच हूँ, मिस शर्मीन इम्तियाज़ लारी। मिस शर्मीन लारी क्या करती थी कि अगर आप क्लास में लेट आए तो आपको गाना गाना है। भाई आवाज़ अच्छी नहीं है, गाना कैसे गाए बंदा? और फिर नजर आ रहा है कि सामने आपके पास 30 बच्चे हंसेंगे आपके ऊपर, कैफेटेरिया में मजाक बनाएगा, तो अगर आप लेट आ रहे हो तो आओ ही नहीं।
तो हम आते थे कैफेटेरिया में जाके बैठ जाते थे। हमारे यहाँ होती है क्लास के बीच में एक ब्रेक। उस टाइम पे प्रोफेसर्स भी आते हैं कैफेटेरिया की तरफ, उन्होंने देख लिया कि बैठे हुए यहाँ पे तो चाय क्लास नहीं ले रहा और क्लास नहीं ले रहा। अरे भाई अब तुम गाना गाओगे कैफेटेरिया में। अच्छा, मतलब ये क्लास तक महदूद नहीं रहा, पूरा कैंपस देखेगा। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि ये यहाँ का कल्चर अच्छा था। क्या बात है, बड़ा मजा आया सुन तो के। बंक की है, मगर एक पॉइंट आता है कि आप का दिल नहीं चाहता बंक करने का, आपको क्लास में रहने का दिल चाहता है। तो इससे ज्यादा बेहतर नहीं था कि वो गाना आप 30 लोगों में गा लेते तो वो ज्यादा सही रहता। हाँ, तो उसके बाद गया। क्या बात है आगा साहब। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे होते हो तो हमने भी देखा, हमारे मुख्तलिफ अलमनाइज आए, उनकी हमने लव स्टोरीज सुनी, ठीक है, तो सक्सेसफुली माशाल्लाह से अचीव भी हुई, किसी की नहीं हुई तो उन्होंने कहा जी छोड़ दें बस, इस बात को ना आप डिस्कस करें। आपके साथ क्या कुछ हुआ, कुछ आप शेयर करेंगे? वैसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कोई मेरे पास नहीं आई, किसी ने मुझे प्रपोज नहीं किया, किसी ने मुझे नहीं बोला कि आप अच्छे, और ना ही ये चीज मैंने की। लेकिन आप किसी को पसंद करते थे या? मैं सबको पसंद करता था। मेरी पर्सनालिटी हमेशा से ऐसी रही है कि आई वांट टू इंटरैक्ट विद एवरीवन। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से गलत कोई किसी किस्म का रिश्ता नहीं है, मेरी सबसे अच्छी बात है। आई एम इन टच विद ऑल द फ्रेंड्स दैट आई मेड ड्यूरिंग माई टाइम इन द यूनिवर्सिटी। अभी भी मेरे साथ उनसे बातचीत। क्या बात है। तो मेरा कभी कोई पर्सनल रिलेशन या उसको आप कहते हैं लव एंगल से अगर आप देखते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। क्योंकि आपको फिर ये चीज़ ना होने से आप फिर आपको पता है आपका ट्रैक क्या है, आपका मिशन क्या है, आपको पढ़ाई करनी है, आपने फिर घर जाना है ना, तो मैं उस पर फिर राग़िब रहा। चलिए, अच्छा हो गया, आगे बढ़ते हैं, अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करते, ठीक है। अच्छा सर, हमारे एक राउंड होता है, इसको हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम जो ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का पुराना स्टाफ है उनका एक नाम हम आपके सामने रखेंगे। आपके दिमाग में जो भी उनके बारे में आए, आपने 1 वर्ड में उनको डिस्क्राइब करना है। और अगर मैं 1 वर्ड में नहीं कर पाया, आप सेंटेंस ले लेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, इजाज़त है सर। राशिद इकबाल। राशिद के पास हम जाते हैं और राशिद कहते हैं, राशिद ये वाला कोर्स चाहिए मुझे। राशिद कहता है डन। और फिर मिलता था? मिलता था। अच्छा, राशिद इज योर मैन टू गो टू गेट एनीथिंग डन। ज़बरदस्त। अच्छा सर, राशिद के बारे में मुख्तलिफ अलमनाइज़ मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन अच्छे अल्फाज में उनको याद किया जाता है। सर, रब नवाज के बारे में क्या कहेंगे? रब नवाज इज द स्वीटेस्ट पर्सन दैट यू कैन मीट इन दिस यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनली भी एंड पर्सनली। जेम। सर, कामरान भाई, again, he is the most helpful personality you will find in this university. Anything that you are facing and you want to discuss with someone to get out of that problem, you can go to Kamran bhai. अच्छा, सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कामरान साहब के साथ, वो सब किसी को नो कहते ही नहीं है। नहीं कहते। उनके लिए मतलब आधी रात को भी आप फोन करेंगे, कामरान भाई ये काम है, हाँ हो जाएगा, डन है। 100% सही है। और मतलब because he is true to himself. एंड वो हमारे ऊपर भी यही रोशनी डालते हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। सर, जमील अहमद के बारे में आप क्या कहेंगे? जमील साहब एग्जामिनेशंस के थे, उस टाइम बड़ा डर लगता था। अभी भी एग्जामिनेशंस का हिस्सा है? हाँ, मतलब अब मेरे एग्जाम नहीं हो रहे ना, अब तो अच्छा, तो उस टाइम एग्जामिनेशंस पे अच्छा, उनका दफ्तर ऊपर होता था। ठीक। एग्जामिनेशन में कंपल्सरी कि आपकी अटेंडेंस पूरी हो। उस टाइम जमील भाई हेल्प करते थे। तो जमील भाई एक लेटर दे देते कि लिख दो इसको, लेना हम अप्रूव कराने की बात करते हैं। सही। सर, मुनीर के बारे में? मुनीर साहब इज अ फाउंडेशन ऑफ दिस university when it comes to the students. He's been here since day one. Amazing personality, always helpful, always here to help you out. मेरे admissions, जितने दोनों admissions, direct मुनीर साहब. Okay. And he will make sure that I would receive the best of care possible in this university. Amazing. क्या बात है. वाइस चांसलर मैडम सीमा मुगल, उनके बारे में मैं इतना कुछ कह सकता हूँ, उनकी तारीफ में इतना कुछ कह सकता हूँ कि हमारा शो खत्म हो जाएगा. शी इज़ अ लिविंग लेजेंड. बिल्कुल सही. शी इज़ अ लिविंग लेजेंड इन
education industry of Pakistan, and Allah उनको लंबी जिंदगी दे। आमीन सुमा। बहुत अच्छी बात आपने बोली, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। रजिस्ट्रार सईद मुगल के बारे में आप क्या कहेंगे? Saeed Mughal Saab is the reason why there is a friendly culture here, because he is the one who made sure that he interacts with everyone, every student, meets them, shakes hands with them, interacts with them, and make everyone comfortable. And that person who does that, उनके लिए तो तारीफ इतनी कर सकता है बंदा कि खत्म ना हो। सर लास्ट वर्ड अबाउट द होल यूनिवर्सिटी, इसकी क्या आप स्ट्रेंथ समझते हैं, क्या पावर समझते हैं? ग्रीनिच यूनिवर्सिटी है क्या आपके दिमाग के हवाले से, क्योंकि अब आप पास आउट कर चुके हैं, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप अब क्या सोचते हैं कि ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ पावर क्या है? सी ग्रीनिच यूनिवर्सिटी जब मार्केट में मैं एंटर हुआ, आई स्टार्टेड मीटिंग tons of people who have graduated from this university. And at that time, I figured out that professional बंदा पैदा होता है, उसको पैदा करता कौन है? उसको यूनिवर्सिटी पैदा करती है। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी पैदा करके दे रही है प्रोफेशनल्स फॉर द मार्केट। नो डाउट सर। इट इज वन ऑफ द बेस्ट universities in Pakistan where your child will learn discipline, education, personality building, speaking power, logical thinking, experiential learning, personality grooming and various traits जो एक professional में होते हैं। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी ऐसे स्टूडेंट्स को पैदा करके मार्केट में डालता है कि नाउ यू आर रेडी टू फेस एनी चैलेंज इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। आई हैव बीन हियर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर बैचलर्स के बाद मेरा 7 साल का गैप था या 5 साल का गैप था, मैं किसी और यूनिवर्सिटी भी जा सकता था। मैं नहीं गया, मैं वापस यहीं पर ही आया, मैंने अपना MBA किया। इससे बड़ी मेरे लिए तो कोई बात नहीं हो सकती। क्या बात है आगा अहमद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप मसरूफ़ हैं, आप काम कर रहे हैं, हमने आपको याद किया और आप यूनिवर्सिटी के लिए दौड़े चले आए। यूनिवर्सिटी आपको सर एक छोटा सा तोहफा दे रही है, वो आपको अच्छा लगे, एक शील्ड है ताकि आपको भी याद रहे कि आप आए हमारे शो में और ये शील्ड आपको मिली है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको दोबारा भी इनवाइट करेंगे, मोस्ट डेफिनेटली हमारी पब्लिकेशन है सारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, जितने भी अलमनाइज हमें देख रहे हैं कि वो हम उनको भी रिकॉल करेंगे, बुलाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि उनकी क्या कुछ एंगेजमेंट ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में रही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। तुझे हर नज़र पे उबूर दूँ, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूँ. This is the purpose of art, and so is the purpose of GU Literary Society. What is art? Art is all about unsung songs of human emotions and stories. We all have stories, complicated stories, connected stories. The purpose of this society is to bring into light all those stories and unsung songs of literary giants and people we are not even aware of. I want to welcome all of you to Greenwich University and looking forward for your participation into the society. And I wish you a very memorable stay here. Hi, my name is Haider Javed. I'm a graduate of Greenwich. It's been 17-18 years.